video we will study about brachial sinus and also brachial fistula. So brachial sinus and brachial fistula क्या होता है? It is a hollow tract which has two openings. Okay? एक होता है external opening और एक होता है internal opening. Internal opening and external opening. तो internal opening brachial sinus के केस में it is the lateral pharyngeal wall. It is the lateral pharyngeal wall. And brachial fistula के केस में it is the behind the tonsil anterior to the posterior pillar of the fauces. ठीक है? तो internal opening क्या है? कहाँ पे है? Internal opening मैंने बोल दिया कि सिस्ट के केस साइनस के केस में इट इज द लैटरल फेरेंजियल वॉल और फिस्टुला के केस में इट इज बिहाइंड द टॉन्सिल एंटीरियर टू द पोस्टीरियर पिलर ऑफ द फॉसेस. एक्सटर्नल ओपनिंग का है ब्रेकियल साइनस का या ब्रेकियल फिस्टुला का, दैट विल डिपेंड वेदर इट इज कॉन्जेनिटल वैरायटी और एक्वायर्ड वैरायटी. अगर कॉन्जेनिटल वैरायटी होता है देन इट इज द लोअर 1/3 ऑफ द नेक एंटीरियर टू द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, एंड इफ इट इज एक्वायर्ड वैरायटी देन इट इज इन द अपर एंड द मिडिल थर्ड ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल. ठीक है, तो ब्रेकियल साइनस ब्रेकियल फिस्टुला क्या होता है, उसका दो ओपनिंग्स कहाँ होता है मैंने बोल दिया. Now, why is brachial sinus or brachial fistula formed? So, it is formed when there is a failure of the fusion of the second brachial arch with the fifth brachial arch, and there is disappearance of the second brachial cleft membrane. तो ये दो रीजन की वजह से हो गया कि सेकंड और फिफ्थ ब्रेकियल आर्च फ्यूज नहीं कर पाए और जो सेकंड ब्रेकियल क्लेफ्ट का मेम्ब्रेन है दैट डिसअपियर्स. ओके, अब पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होगा? जब पेशेंट आपके पास आया तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगा? So patient will say that there is an opening. First of all, the patient will say that there is an opening in the anterior border of the sternocleidomastoid muscle. वो patient तो बोलेगा neck में एक opening है, and the patient will have a discharging sinus from that opening. तो आप discharging sinus को फिर question करोगे किस टाइप का sinus है? You will see that this is a mucoid type of sinus. Okay, and sometimes this opening can get blocked, and the discharge stops after some time. And after that, there is a recurrent of mucoid discharge. मतलब एक opening है neck में, वहाँ से कभी-कभी discharge होता है, फिर discharge बंद होता है, फिर discharge होता है. ठीक है? As a doctor, what will you examine? So you will see कि साइट कहाँ पे है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो acquired है कि congenital है. आप देखोगे डिस्चार्ज वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. You will also see any hood of skin around the opening of the sinus. ठीक है? Is there any movement of that swelling with the opening, with the protrusion of the tongue to avoid or to exclude thyroid related conditions? And you will also examine the cervical group of lymph nodes. ठीक है? As a doctor आप ये 5 points देखोगे और पेशेंट दो चीज कंप्लेन करेगा, डिस्चार्जिंग साइनस और एक ओपनिंग के बारे में कंप्लेन करेगा. Now come to the management of this case. तो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट. इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं हम लोग एक साइनोग्राम करते हैं. Why do we do the sonogram? To delineate the fistulous tract. वो पूरे ट्रैक्ट को डिलीनेट करने के लिए मैं साइनोग्राम करूंगी. एंड ऑल्सो हम लोग एक रेडियो ओपिक डाई जिसका नाम है मेग्लूमाइन आयोथैलेमेट उसको इंजेक्ट कर देते हैं थ्रू द एक्सटर्नल ऑरिफिस और एक एक्सरे के थ्रू पूरे ट्रैक्ट को देखते हैं. सो वन इज रेडियो ओपिक डाई इंजेक्शन टू सी द ट्रैक्ट एंड वन इज द साइनोग्राम. नाउ हाउ विल आई ट्रीट दिस पेशेंट? नाउ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट आई विल डू सर्जिकल ट्रीटमेंट. ओके, और सर्जिकल ट्रीटमेंट पे क्या होता है? कंप्लीट एक्ससिजन ऑफ द फिस्टुला from the external opening up to the laryngeal wall. Okay, surgical treatment मतलब excision of the fistula बाहर से लेके पूरा अंदर तक. Now there is one question which is related with this topic कि वो ट्रैक्ट का कोर्स बताओ. तो आप देख सकते हो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में देखो ये स्किन है, तो स्किन में आपका एक्सटर्नल ओपनिंग होगा. कहाँ पे होता है? We have already discussed. Okay, then this tract will pierce the deep fascia at the level of the upper border of the thyroid cartilage. It will cross the bifurcation of the common carotid artery. It lies superficial to the internal carotid artery and lies deep to the external carotid artery. Then it ascends upwards to end in the lateral pharyngeal wall. Okay, and it will pierce the superior constrictor of the pharynx and lies superficial to the stylopharyngeus and the glossopharyngeal nerve. Okay, internal opening मेरे को पता है, या तो वो lateral pharyngeal wall में end हो जाएगा या फिर it will lie behind the tonsil anterior to the posterior pillar of the fauces. So basically skin से होता हुआ ये upper border of the thyroid cartilage, bifurcation of the common carotid artery, it will ascend upwards to the lateral pharyngeal wall. This is the course of the brachial fistula tract, and this is all about brachial sinus and brachial fistula.